Sorry. Om Agyanam Timirandasya Gyanajana Shalakya Chakshurunmritamena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamayan Dasi Sapadandika Vande Ham Shri Guru Shri Uttapadakam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagar Jatam Sayagan Raghunath Vitam Tam Sajivam Sadhuvetam Savadutan Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sayagan Lalita Shri Vishakavatam Cha नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। Yes, Ishu Prabhu. The atomic scientist may consider annihilating the material world by nuclear weapons, but his weapon cannot destroy the antimaterial world. The antimaterial particle is more clearly explained in the following lines. It is neither cut into pieces by any material weapon, nor it is burned by fire, nor it is moistened by the water, nor withered, nor dried up, nor evaporated in the air. It is indivisible, non-flammable, and insoluble, because it is eternal. It can enter into any leaf, any sort of body, being steady by constitution. Its qualities are always fixed. It is inexplicable because it is contrary to is unthinkable by the ordinary brain. It is unchangeable. No one, therefore, should ever lament for what is an eternal anti-material principle. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. Thus, in the Bhagavad Gita and in all other Vedic literatures, the superior energy, antimaterial principle, is accepted as the vital force or the living spirit. This is also called the Jiva. This principle cannot be generated by any combination of material elements. There are 8 material principles which are described as inferior energies, and they are earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. Apart from these is the living force or the antimaterial principle, which is described as the superior energy. These are called energies because they are wielded and controlled by the supreme living being, the personality of Godhead, Krishna. For a long time, the materialist was limited within the boundary of 8 material principles mentioned above. Now it is encouraging to see that he has a little preliminary information of the anti-material principle and the anti-material universe. We hope that with the progress of time, the materialist will be able to estimate the value of anti-material world in which there is no trace of material principles. Of course, the word anti-material indicate the principle is in opposition to all material qualities. Yes, Pravi. We also have Anushka Mataji here. Yes, yes, please, Anushka Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. There are, of course, the mental speculators who comment upon the anti-material principle. These fall into 2 main groups, and they arrive at 2 different erroneous conclusions. One group, the gross materialist, either denies the anti-material particle or admits only the disintegration of material combination at a certain stage, death. The other group accepts the anti-material principle as being in direct opposition to the material principle with its 24 categories. This group is known as the Sankyates.
and they investigate the material principles and analyze them minutely. At the end of their investigation, the Sankhites finally accept only a transcendental, anti-material, non-active principle. However, difficulties arise for all these mental speculators because they speculate with the help of inferior energy. They do not accept information from the superior. In order to realize the real position of the anti-material principle, one must rise to the transcendental plane of superior energy. Bhakti yoga is the very activity of the superior energy. From the platform of material world, one cannot estimate the real position of the anti-material world. But the Supreme Lord, who is the controller of both material and anti-material energies, descends out of his causeless mercy and gave us complete information of the anti-material world. In this way, we can know that anti-material world is the Supreme Lord and the living entities are both anti-material in quality. We are informed. Thus, we have an idea of the Supreme Lord by an elaborate study of living entities, of the living entities. Every living entity is an individual person. Therefore, the supreme living being not mu- therefore the supreme living being must also be the supreme person. In the Vedic literatures, and supreme person is properly claimed to be Krishna. The name Krishna indicates the supreme Lord is the only true intelligible name of the highest order. He is the controller of both material and anti-material energies. And the very word Krishna signifies that he is the supreme controller. In the Bhagavad Gita, Lord confirmed this as follows: there are two worlds, the material and anti-material world. The material world is composed of inferior qualitative energy divided into 8 material principles. The anti-material world is made of superior qualitative energies. Because both material and anti-material energies are an emanation of supreme transcendence, the personality of Godhead, it is proper to conclude that I, Lord Krishna, I am the ultimate cause of all the creation and annihilations. Hare Krishna. Because the Lord's two energies, inferior and superior, manifest the material and anti-material worlds, he is called the Supreme Absolute Truth. Lord Krishna explains this in the Bhagavad Gita. Thus, I am, Arjuna, the highest principle of transcendence, and there is nothing greater than me. Everything that rests on my energies exactly like pearls on a thread. Madhuri. Long before the discovery of the principles of antimatter and the antimaterial worlds, the subject was delineated in the pages of Bhagavad Gita. The Gita itself indicates that its philosophy had previously been taught to the presiding deity of the sun, which implies that the principles of the Bhagavad Gita were expounded by the personality of Godhead long before the battle of Kurukshetra. At least some one But 12 crore years before. yeah. Now, modern science has just discovered a fraction of the truths that are available in the Bhagavad Gita. The assumption of an anti-material universe is also found in the Bhagavad Gita, and from all data available, it is to be assumed without the slightest doubt that the anti-material world is situated in the anti-material sky, and the sky which is mentioned on the Bhagavad Gita as Sanatan Dham or the eternal nature. Hare Krishna. Sorry. Exactly as material atoms create the material world, the antimaterial atoms create the antimaterial world with all its paraphernalia. The antimaterial world is inhabited by antimaterial living beings. In antimaterial world, there is no inert matter. Everything there is a living principle. Is a living. Everything there is a living principle, and the supreme personality is that in that region is God Himself. The essence of the antimaterial world possesses eternal life, eternal knowledge, and eternal bliss. In other words, they have all the qualifications of God.
In the material world, the topmost planet is called Satyaloka or Brahmaloka. Beings of the greatest talents live on this planet. The presiding deity of Brahmaloka is Brahma, the first created being of this material world. Brahma is a living being like so many of us, but he is the most talented personality in the material world. He is not so talented that he is in the category of God, but he is in the category of those living entities directly dominated by God. God and the living entities both belong to the anti-material world. The scientist, therefore, would be rendering service to everyone by researching the constitution of the anti-material world, how it is administered, how things are shaped there, who are the presiding personalities, and so on. Of the Vedic literature, Srimad Bhagavatam deals elaborately with these matters. The Bhagavad Gita is the preliminary study of the Srimad Bhagavatam. These two important books of knowledge should be thoroughly studied by all men in the scientific world. These books would give many clues to scientific progress and would indicate many new discoveries. The transcendentalist and materialist are two distinct classes of men. The transcendentalist gathers knowledge from authoritative scriptures like the Vedas. Vedic, lit- Vedic literature is received from authoritative sources which are in the line of transcendental disciplic succession. This disciplic succession, parampara, is also mentioned in the Bhagavad Gita. Krishna says in the Bhagavad Gita that hundreds of thousands of years ago, the Gita was spoken to the presiding deity of the sun, who delivered the knowledge to the son Manu, from whom the present generation of man has descended. Manu, in his turn, delivered this transcendental knowledge to his son King Ishvaku, who is the forefather of the dynasty in which the personality of Godhead, Sri Rama, appeared. This long chain of disciplic succession was broken during the period of Lord Krishna, 5,000 years ago. And for this reason, Krishna restated the Bhagavad Gita to Arjuna, thereby making him the first disciple of this knowledge in this age. The transcendentalist of this age, therefore, is in the disciplic line that starts with Arjuna. Without troubling himself with materialistic research work, the transcendentalist acquires the truth concerning matter and antimatter is the in the most perfect way through the disciplic succession, and thereby saves himself much botheration. The gross materialists, however, do not believe in the entry material worlds of the personality of Godhead. They are therefore unfortunate creatures, although sometimes very talented, educated, and advanced otherwise. They are bewildered by the influence of material manifestation and are devoid of knowledge of things anti-material. It is good sign, therefore, that the materialistic scientists are gradually progressing towards the region of the anti-material world. It may even be possible for them to make sufficient progress to be able to know the details of this anti-material world, where the personality of Godhead reside as the predominating figure, and where the living entities live with him and serve him. The living entities who serve the Godhead are equal in quality to him, but at the same time, they are predominated as servitors. In the anti-material world, there is no difference between the predominated and the predominated. In the anti-material world, there is no difference between the predominated and predominated. The relationship is in perfection and without tinge of materialism. Yes, Prabhuji. The nature of the material world is destructive. According to the Bhagavad Gita, there is some partial truth to the assumption of the physical scientist that there is annihilation of the material and anti-material world when they chance to clash. The material world is a creation of changing modes of nature. These modes, gunas, are also known as satoguna, rajoguna, and tamoguna, goodness, passion, and ignorance. The material world is created by the mode of rajas, maintained by the mode of sattva, and annihilated by the mode of tamas. These modes are omni
omnipresent in the material world, and as such, at every hour, every minute, every second, the process of creation and creation, maintenance, and alienation is taking place all over the material universe. The highest planet of the material universe, Brahmaloka, is also subjected to these three modes of nature. Although the duration of life on the planet mode of sattva is said to be 43 lakh 43 lakh into 1000 into 2 into 30 into 12 into 100 solar years. Despite this long duration, however, the Brahmaloka is subjected to destruction. Although life on Brahmaloka is fascinatingly long compared to the life on Earth, it is only a flash in comparison to the eternal life of the non-material worlds. Con, con, constant, con, hold on. Consequently, the speaker of Bhagavad Gita, the Lord Sri Krishna, asserts the importance of anti-material world, anti-material universe, which is his ado. Hare Krishna. Lord Krishna Lord Krishna instructs that all the planets within the material universe are destroyed at the end of 43 lakh into 1000 into 2 into 30 into 12 into 100 solar years. And all the living beings inhabiting these material planets are destroyed materially along with the destruction of the material worlds. The living entity, however, is constitutionally an anti-material particle. But unless he elevates himself to the region of the anti-material worlds by cultivation of anti-material activities, he is destroyed materially at the annihilation of the material world and is subject to take rebirth in a material shape with the rebirth of a new material universe. In other words, he is subject to the pains of repeated birth and death. Only those living entities who take to the loving service of the personality of Godhead during the manifested stage of material life are undoubtedly transferred to the anti-material worlds after quitting the material body. Immortality is obtained only by those who return to Godhead by practice of anti-material activities. What are these anti-material activities? They are medicines. For example, when a man falls ill, he goes to a physician who prescribes medicines which eventually cure the suffering patient. Similarly, the materialist is ailing and he should consult an expert transcendentalist physician. What is his ailment? He is suffering the tribulations of repeated births, deaths, diseases, and old age. Once he agrees to put himself under the back to Godhead treatment, he is able to transfer himself to the anti-material world where there is eternal life instead of birth and death. Okay, so we will stop here. We can start with the reflections or realizations. Because we have already started late today. Ishu Prabhu. ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शंस तो नहीं है आज, लेकिन एक क्वेश्चन था. Though I like one point, that is mainly that Prabhupada is telling that there is in every moment in this material world there is annihilation, creation, and destruction, maintenance. And we can see it throughout the day in our body, in the existence surrounding us. So we can see that there is continuous creation, maintenance, destruction is happening with in body, within cells, and outside the body, they're surrounding around us. So in fact, if you observe everything, that in every creation there is these three things happening at every moment. So yeah, I like that point, that and compared to the eternal things, which is they are saying anti-material, and these which is free from these three things, creation, maintaining, and destruction. Yeah. And the other thing I have to ask, that
जो प्रभुपाद डिसाइपल सक्सेशन की बात कर रहे हैं इस नॉलेज की, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी हमेशा रही है जानने की कि ये तो मतलब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो हमारे डिसाइपल चेन में नाम क्यों नहीं आता अर्जुन का कि why is not written down? We started from ब्रह्मा जी, वेद व्यास, उसके बाद नारद जी, वेद व्यास, and thereafter Madhvas, and now we come to Prabhupada, but we cannot see Arjuna in that disciplic chain. I don't know why. या तो ये कहें कि अर्जुन ने भी स्टार्ट की होगी उस टाइम पे, बट इट गॉट लॉस्ट. तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, कि कुछ तो रहा होगा रीजन अर्जुन को ना लाने के लिए, क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन, एज Prabhupada is saying, to get this transcendental knowledge in this in this age. So yeah, I have to ask this question. अच्छा, That's it. मतलब गुरु परंपरा में अर्जुन का नाम नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी. तो मे भी इसलिए होगा क्योंकि अर्जुन ने आगे ट्रांसफर मतलब ये जो नॉलेज है ट्रांसफर नहीं किया होगा, क्योंकि जो पूरा महाभारत है और जितने भी ग्रंथ है वो मेरे ख्याल से व्यास देव जी ने लिखे थे. आई डोंट हैव एनी आइडिया. राइट, वही मेरे को लगता है कि अर्जुन ने भी स्टार्ट की होगी उस टाइम पे, लेकिन एट द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो गई होगी. मतलब कुछ तो स्टार्ट किए होगा ना. अब इतना ज्यादा अब हम ये एक किताब पढ़ लेते तो हमें बताने की इच्छा होती है. अर्जुन को तो पूरा भगवान ने साक्षात ज्ञान दिया था, तो उनकी इच्छा क्यों नहीं होगी बताने की किसी और को. तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जग रही थी कि दिस इज सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि आप खुद तक नहीं रख सकते हो. अगर आपको पता लग गया है ये सारी नॉलेज, तो one in another way you try to pass this knowledge to other person, by this which they can help themselves and others. तो अर्जुन ने तो साक्षात भगवान से सुना था. तो he is more curious than us, more excited about this knowledge than us. तो उन्होंने भी स्टार्ट तो की होगी. मुझे ऐसा लगता है कि इस पे चर्चा तो उन्होंने भी स्टार्ट की होगी, बट somehow or other कि वो इतना मतलब लॉन्ग टाइम तक, मतलब ये है कि टाइम को मतलब they cannot pass the time test, so it get distracted. Which Prabhupada is saying, maybe I don't know the answer, maybe, or he choose not to give to other person. Yeah, maybe some मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन को शायद सोर्स बनाया गया, वो सुना के फिर वो आगे चीजें जा सके वो नॉलेज. और एज सच मतलब डिसाइपलिक सक्सेशन में भी ये होता है ना कि प्रॉपर वो डिसाइपल कोई गुरु एक्सेप्ट करते हैं. तो मे बी अर्जुन ने वो डिसाइपलिक सक्सेशन नहीं फॉलो किया कि आगे किसी को वो फॉर्मली वो किसी को ट्रांसफर करना नॉलेज, बट वो फिर आगे वेद व्यास. Krishna, am I audible? Yes, you are. Mataji got lost, I guess. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ओके ओके. नहीं, यही बोल रही थी प्रभु जी मैं तो बस. हाँ, मे बी वही कुछ प्लान्स रहे होंगे भगवान के, मतलब नो आइडिया. बाकी हेलो अश्विनी प्रभु, डिस्कस कर लेंगे मे बी नेक्स्ट क्लास में ना. यस यस यस. इनफैक्ट मेरा भी एक क्वेश्चन था. इन बिटवीन वी वर रीडिंग अबाउट टू काइंड ऑफ पीपल, तो उसमें वन वाज सांख्याइट्स, अनदर क्लास भी थी. एक्चुअली आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल वी वर रीडिंग दैट पैराग्राफ. तो वो मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली. फिर मे बी आई विल रीड अगेन, या आप में से किसी को समझ आया हो तो. I can share the screen again. You know, the transcendentalist and the materialist are two distinct classes of men. नहीं, इसमें प्रॉपर वो वर्ड लिखा था सांख्याइट्स, तो उसमें वहां बताया. हाँ यही था क्या? हाँ तो सही था, ऊपर कहीं था. इनफैक्ट भगवत गीता में भी भगवान ने बताया सांख्य योग के बारे में, बट सांख्याइट्स ये वाला ये मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे. आई मिस्ड इट. ये बेसिकली आई गेस जो थर्ड कैंटो में आता है, जो भगवान कपिल के जो वो देते हैं सांख्य योग का ज्ञान, जिसमें 24 एलिमेंट
जिसमें पूरा मटेरियल वर्ल्ड बना है, जिससे उसका ज्ञान जो देते हैं, तो उसके बारे में बात करें कि दे minutely they study those 24 parts, कि how the formation and this happens, and maybe I don't know the right thing, maybe मैं वहां से कनेक्ट कर पा रहा हूँ चीजों को कि this group as Sankhya and they investigate the material principles and analyze them minutely. At the end their investigation, the Sankhites finally accept only the transcendental, anti-material, non-active principle. However, difficulty arises for all those mental speculators because they speculate with the help of inferior energy. मतलब या मेरे को भी वही लगा कि ये 24 कैटेगरीज लिखी है ना प्रभुपाद ने, ऊपर ही लिखी था, the group expects the anti-material principle as its direct opposition to the material with its 24 categories. तो sort of ये कि सांख्याइस्ट में भी प्रभुपाद उस वे में कह रहे हो कि जैसे कंपेयर कर रहे हो साइंटिस्ट को और मे बी अदर पीपल who genuinely interested in those, कि जानना चाहते हो इनके बारे में, and but they got lost क्योंकि उनके नॉलेज नहीं है, प्योर नॉलेज नहीं है। एक बार आप माता जी ऊपर से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो शायद और अच्छे से कनेक्ट कर मैं पाएंगे। वो तो रिलेट कर रही थी कि भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं सांख्य योग के बारे में, कपिल देव ने भी बताया, बट समहाउ यहाँ पे फिर समझ नहीं आया। बट आई थिंक प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, तो मे बी देयर आर मतलब कुछ क्लास ऑफ पीपल हों जो सांख्य योग के थ्रू ही चीजों को समझने का ट्राई कर रहे हो। ये है ना, ये the one group, the gross materialist, either denies the anti-material principle or admits only the disintegration of material components at a certain stage. So yeah, this is what I think. एक बार आप और पढ़िएगा तो मतलब ये और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आप। सांख्याइट्स मतलब जो मेटेरियल, जो शून्यवाद में बिलीव करते हैं ना, शंकराचार्य वाली फिलॉसफी, जो कि कहते हैं कि मटेरियल से, मैटर से सब कुछ क्रिएट हुआ है, तो मुझे लग रहा है शायद सांख्याइट्स वो फिलॉसफी अलग होता है, अलग होता है शायद, मतलब आई एम आल्सो नॉट श्योर कि बट सांख्य योग और वो मायावाद वाला शायद फिलॉसफी अलग है। सांख्य योग तो इन्हीं से फ्लो होता है, कपिल देव से फ्लो होता है, जिन्होंने स्टार्ट किया था थर्ड कैंटो में। सनातन के सिंक में आप ये कह रहे हो? हाँ, ये इसी के सिंक में है कि बट द थिंग इज कि साइंटिस्ट प्रभुपाद आप किस टर्मिनोलॉजी में यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड लिखा है ना, हाउएवर डिफिकल्टी अराइजेस ऑल ऑफ दीज मेंटल स्पेकुलेटर बिकॉज दे स्पेकुलेट विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर एनर्जी। सो प्रॉपर ज्ञान इनके पास भी नहीं है, दे डू नॉट एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुपीरियर in order to realize the real position of anti-material principle. One must rise to the transcendental plane of superior energy. Bhakti is a very active part of superior energy. मतलब उनके पास वो रसा नहीं है, मतलब सांख्याइस्ट के पास सिर्फ फैक्ट्स और तथ्य पे रहते हैं वो कि ये चीजें हैं, और वो एज अ सुप्रीम गॉडेड को मानते नहीं है, तो डू नॉट हैव एनी, मतलब पता तो चल जाएगा उन्हें कि क्या चीजें हैं, लेकिन एट द एंड अगर वो सुपीरियर मतलब भगवान को मानेंगे तो या दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू देम rather speculating on these 24 elements. Yeah, what I've gained from this paragraph, this is what I've gained. Yeah. लग रहा है ये वो आर्य समाज जो फिलॉसफी फॉलो करते हैं ना, वो ही है ये, वो क्योंकि वो लोग यही फिलॉसफी फॉलो करते हैं जो ओम से लेवल पे। प्रभु जी ये वो है, वैलिड है, मतलब सांख्य योग भी आई गेस कृष्णा ने भी सपोर्ट किया है, वो भी वैलिड है, मतलब वैलिड तो वो भी है जो आर्य समाज फॉलो करते हैं, बट वो ये कंसिडर नहीं करते कि कृष्ण से आया है ये, आप समझ रहे हो? आर्य समाज जो है वो हाँ, दे डोंट बिलीव इन मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, बट वो मैटर में बिलीव करते हैं कि, और वो हवन इसलिए करते हैं, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स, मतलब दे ट्राई टू टेक ऑल द एलिमेंट्स इन दैट हवन। एनीवेज, हाँ ठीक है, ये दो डाउट मैं लिख लेता हूँ और वी कैन डिस्कस इट ऑन। एनीथिंग एल्स माता जी? नहीं प्रभु जी, वैसे तो मतलब एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने वही मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल स्काई के बारे में भगवत गीता से रेफरेंस लेते हुए, तो यही था बस। ओके, अनुष्का माता जी? ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का तो नहीं था, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। मुझे एक पॉइंट आया था कि जिसमें बता रहे थे कि जो हम हैं और
एंटी मटेरियल जिसे कह रहे हैं वो अलग नहीं है, वो मतलब वहाँ पे लाइफ एटर्नल है, नॉलेज एटर्नल है, ब्लिस एटर्नल है। तो मतलब हमारी और गॉड की जो ऐसे बताया, शायद शायद मैंने गलत समझ लिया होगा, आई गेस वहाँ पे बोला कि क्वालिफिकेशंस गॉड और हमारी सेम है। तो प्रभु जी यही डाउट था, कैसे क्वालिफिकेशन मतलब हमारी कैसे सेम हो सकती है? ठीक है, तो मतलब अभी मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने जैसे कहीं पढ़ा है या लेक्चर में सुना है, तो क्वालिफिकेशन सेम ऐसे होती है जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना पृथ्वी लोक पे, तो डिस्क्रिमिनेशन है, हर कोई अलग दिखता है और अलग अलग बोलता है ना, तो डेट्स वाई डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन लेकिन वैकुंठा में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर जैसे हम अजामिल पास टाइम में पढ़ेंगे तो उसमें जो विष्णु दूत होते हैं वो भी ना 400 होते हैं, तो उनका जो जो उनका बॉडी का ऑरा होता है ना, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम भगवान जैसा होता है। रीजन बीइंग कि एक ये रीजन भी हो सकता है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई ये अलग दिखता है वो अलग दिखता है, सब भगवान जैसे दिखते हैं, है ना। तो सो आई थिंक टू प्रमोट द इक्वलिटी, और वहां पे इसलिए ही वहां पे कोई केओस नहीं है और जेलसी नहीं है, क्योंकि सब इक्वल पोटेंसी में है सबकी। हाँ, ईशु प्रभु प्लीज। नहीं प्रभु, मेरे का एक क्वेश्चन है कि प्रभु जब हम कंफ्यूज नहीं होते होंगे वैकुंठा में, जस्ट सॉर्ट ऑफ कि सभी एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो मतलब भगवान भगवान का कुछ तो अलग फीचर होगा, मे बी मोर पंख हाँ, होगा या भगवान का वैसे बांसुरी। जी मतलब ऐसा बोलते हैं जो गुरु महाराज भी बता रहे थे कि अगर भगवान के ना दो चीजें सबसे अलग होती हैं, एक मुझे याद है, दूसरी आई फॉरगॉट। भगवान ना कौस्तुभ मणि पहनते हैं जो कि कोई और भगवान के पार्षद के पास नहीं होगी। तो दैट इज ऑल्सो वन फीचर। प्लस अगर अनुष्का माता जी का क्वेश्चन है कि वहां बोल रहे हैं क्वालिटेटिवली वो सेम होते हैं, एज इन कि जो जितना मुझे समझ आता है, जैसे प्रभुपाद जी ने भी पहले बुक्स में एग्जांपल दिया है फायर और स्पार्क वाला। तो अब वो स्पार्क या वो जो पार्टिकल है फायर के, वो तो बहुत सारे हैं ना, तो क्वालिटेटिवली वो भी सेम फीचर रखते हैं जो फायर का होता है। तो वही मतलब प्रभुपाद जी ने पहले भी एग्जांपल दिया है, तो वही इस केस में भी आई थिंक वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो प्रभुपाद जी ने भी एक्चुअली अप्लाई किया था कि हम भी ना वो उस फायर में से निकले हुए, हम सब स्पार्क ही हैं। तो क्वालिटेटिवली हमारे अंदर भी वो हैं, वो वैसे वाली क्वालिटीज हैं। बट जब हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, कंडीशंस ऐसी अप्लाई हो जाती हैं, वो 3 मोड्स ऑफ नेचर लगते हैं, तो फिर हमारी कंडीशन एक्चुअली ऐसी हो जाती है। बट ऐसे देखा जाए तो पार्ट एंड पार्सल तो हम भगवान के ही हैं। तो क्वालिटी ट्रू तो माता जी, क्वालिटी तो यहाँ भी सेम हम्म, होती है। यस प्रभु जी, यस प्लीज। हाँ क्वांटिटी में डिफरेंस है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि क्वालिटी तो सारी मतलब सेम ही है, सेम मतलब वो है कि स्पार्क सेम है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी सेम है हमारा, कि हम आए आए उनसे, तो बट क्वांटिटेटिवली वी आर मच 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 लेसर देन हिम। सो या एक बार हम वैसा मतलब इफ वी गो बैक टू मटेरियल वर्ल्ड, पता नहीं हम वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते होंगे सुपीरियर वहाँ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, बट या व्हाट वी कैन एस्टिमेट फ्रॉम दिस कि मे बी बॉडी लेवल पे ना बात कर रहे हो कृष्ण, इसमें सोल की लेवल पे बात कर रहे हो कि हाउ it is all similar that what is there in spiritual world. So maybe वहां पे भी बात हो रही है, उस क्वालिटी की बात हो रही है कि स्पार्क जैसे जो सोल के बारे में बताते कैरेक्टरिस्टिक्स। जी ईशु प्रभु, एक बार ना हम लेक्चर भी सुन रही थी मैं, तो वहां वैसे बोल तो यही रहे थे महाराज जी की पार्षद जो होते हैं ना भगवान के, वो होते बिल्कुल सेम ही है देखने में भी ना। उदित प्रभु करेक्ट मी, मतलब मुझे तो यही सुना था मैंने आप सही कह कि रहे हो कि महाराज जी। भगवान के पास अजामिल वाला। हाँ जी yes, प्रभु जी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस महाराज जी। हाँ, कि अजामिल वाला भी जो हम वो मतलब सुना था लेक्चर महाराज जी का, तो उसमें वो यही बता रहे थे कि पार्षद जो होते हैं ना भगवान के, वो देखने में बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। डिफरेंस तब बताया था कि एक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वही मुझे याद है, दूसरा मुझे याद नहीं है। तो अदरवाइज वो देखने में भी पार्षद भगवान के वैसे ही होते हैं। यानी जैसे पढ़ते भी हैं तो हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि जो भगवान के हाथों से जो किल होता है उसे स्वरूप मुक्ति मिलती है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि स्वरूप मुक्ति एक्चुअली वही होती है जिसमें भगवान जैसा ही बिल्कुल रूप मिल जाता है और फिर भगवान के धाम चले जाते हैं।
आई गेस दूसरा पॉइंट माता जी वो मोर पंख का होगा क्योंकि और कोई तो नहीं दिखता मोर हाँ पंख में और हाँ, हो सकता बांसुरी है। में। मे और बी कोई हम तो ये ट्राई भी कर सकते हैं फाइंड आउट करने का और पूछ भी सकते हैं, जी माता जी। जिससे हमें पता लग जाए कि दो डिफरेंसेस क्या थे। बट हाँ एनीवे वहाँ पे वो ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता नहीं वहाँ पे मतलब कुछ इतना ज्यादा ज्ञान होता होगा कि मुझे लगता नहीं कि कुछ नीड होती होगी कि किसी को अलग से पहचानने की। मतलब वहाँ पे ऐसे ही बताते हैं, गुरु महाराज जी बताते हैं, तो उसमें कहते हैं कि वहाँ पे सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जिसका जब मन करता है कोई गाय बन जाता है, कोई पेड़ बन जाता है। मतलब भगवान की सर्विस में, भगवान की सर्विस में ऐसा हाँ लग रहा है कि भगवान को गाय मतलब गायें चाहिए, मतलब वो उनसे कुछ प्लेजर लेना चाहते हैं तो लोग गाय बन जाते हैं। तो ऐसा ऐसा रहता है कि anyways, मतलब ठीक है, वहीं जाके पता चलेगा वैसे मेरे को लगता है ये तो। अगर ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स? ओके, सो we are finishing it off. वंचा कल्पद्रुभश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। Thank you everyone for joining. Hare Krishna. हरे कृष्ण।